Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Haley and today I am going to do something very exciting. For the first time ever in my life, मैंने पहले ये कभी नहीं किया है, बट मैंने इंटरनेट पे देखा है बहुत सारे लोगों को करते हुए, और वो है विजन बोर्ड. So as 2024 is coming to an end and as I am aging, मुझे लग रहा है कि अगर आपको लाइफ में सीरियसली कुछ चाहिए ना, तो उसके लिए कॉन्शियसली एफर्ट्स करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको बाय चांस कुछ चीज मिल गई ना विदाउट एफर्ट्स, तो भी उसको टिकाने के लिए, उसको रखने के लिए भी आपको कंटिन्यूअस एफर्ट्स करना बहुत जरूरी है. सो लास्ट फ्यू मंथ्स और रादर ईयर्स आई हैव बीन वेरी कॉन्शियस अबाउट माय फिजिकल हेल्थ. और बेसिकली जब मैं सिंगापुर मूव हुई ना, उसके बाद I felt that I am very physically unfit, and that time I used to weigh almost 14 kilograms more than my current weight. और यहाँ पे ना बहुत वॉक करना पड़ता है. बेसिकली इंडिया में क्या है कि अपने पास कार होती है, अपने पास कुछ ना कुछ व्हीकल रहता ही है हर एक घर में. बट यहाँ पे पीपल मोस्टली रिलाई ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, और कार अफोर्ड करना इज वेरी एक्सपेंसिव इन सिंगापुर. इफ यू डोंट नो, सिंगापुर इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज टू अफोर्ड अ कार. तो दैट बीइंग द केस, हमें बहुत वॉक करना पड़ता है बेसिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इवन इफ वी आर टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इवन इफ यू हैव लाइक गुड कनेक्टिविटी अराउंड योर प्लेस. एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, ऑन एन एवरेज आई वाज वॉकिंग लाइक 6 to 7,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे. सो उस टाइम पे ना मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत अनफिट हूँ यार. और फिर मैंने कॉन्शियस एफर्ट्स डाले थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी में. वो जो बाय डिफॉल्ट होती थी वो तो होती ही थी, बट उसके अलावा भी आई बिकेम वेरी कॉन्शियस विथ माई डाइट. So I used to try and avoid sweets and fried stuff. So ऐसे करके ना थोड़े एफर्ट्स डाल के, चेंजेस ला के, एंड देन आई ऑप्टेड फॉर अ डाइटिशियन कोर्स. तो मैंने 4 months का वो कोर्स किया, एंड देन एट दैट टाइम आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, एंड दैट इज द टाइम आई एक्चुअली लॉस्ट लाइक 8 kgs, and that has happened very recently. If you want a separate video on my diet program, आप मुझे प्लीज बताना. आई विल लेट यू नो कि व्हाट रियली हेल्प मी. लाइक अपार्ट फ्रॉम डाइट ना, आपका एक माइंडसेट होना भी बहुत जरूरी है. इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशन एंड योर सेल्फ बिलीफ. सो एक स्पेसिफिक माइंडसेट से आप कॉन्स्टेंटली अगर एफर्ट्स डालते रहोगे ना किसी भी डायरेक्शन में, सूनर और लेटर दैट थिंग विल वर्क आउट फॉर यू. दैट इज व्हाट आई हैव कम टू रियलाइज this year. So I have also started, like it's only been a few days, but I've also started working on my mental health. So I've started like morning affirmations or journaling, और उससे ना मेरे emotions काफ़ी regulate हो रहे हैं. I am able to keep my mind focused on what I really want from myself and from my life. And that has helped me, and that has led me to a conclusion कि चलो एक intention set करते हैं vision board के लिए. So those of you who are new to vision board basically क्या है ना, it's a list of your goals in a pictures format. So basically those can be your physical goals, your financial goals, your professional goals, your personal relationship goals, your travel goals, anything. You can just visualize your goals, where you would want to be or where you would want to go with your life in the next year, or maybe in the next 2 years or 5 years. And उसके सारे images आप gather कर सकते हो from the internet. I have used Pinterest for creating my vision board. So basically क्या है कि I have categorized my goals into certain categories that I want to focus on. और ये vision board ना usually ऐसे holistic होता है, that will cover all the major aspects of your life. So basically I have brainstormed the things that I want from my life in 2025. And it may not necessarily happen in 2025, but it may take 5 or 10 years. But someday I want to be there. That is what I visualize for my life. विजन बोर्ड को आप कहीं भी एक कॉर्नर में अपने बेडरूम में लगा सकते हो, एंड यू नीड टू कीप इट एट अ प्लेस जहाँ पे आप सुबह उठ के सबसे पहले चीज यही देखो. सो होता क्या है ना, हमारी लाइफ में एवरी डे कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं, और हमारा माइंड ना, ह्यूमन ब्रेन इज सच दैट वी रजिस्टर नेगेटिव फीलिंग्स एंड नेगेटिव थॉट्स वेरी इजीली, बिकॉज यू डोंट नीड टू रियली वर्क और डू एनीथिंग फॉर दैट. आपको मेहनत तब करनी पड़ेगी जब आपको पॉजिटिव चीजें अपने दिमाग में रखनी है, जब आपको पॉजिटिव थॉट्स जनरेट करने हैं, जब आपको पॉजिटिव थॉट्स और बिलीव्स को अपने माइंड में स्टोर करना है, अपने थॉट्स को डाइवर्ट करना है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. दैट इज व्हेन द रियल वर्क कम्स इन.
सुबह में जब अब हम उठते हैं उसके बाद के लाइक 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स हमारा सबकॉन्शियस माइंड अभी भी एक्टिव होता है, और उस टाइम पे हम जो भी कंज्यूम करते हैं ना, वट एवर थॉट्स वी कंज्यूम, वट एवर विजुअल्स वी कंज्यूम, that basically dictates our day and ultimately our life also. So I want to make sure that I don't want to think anything negative in the morning. I want to look at my goals and I want to be clear about where I want to go throughout my day. और it's a psychological study also, मतलब scientifically ये prove हुआ है कि vision board kind of creates neuro pathways in your mind, which will throughout the day help you to take appropriate decisions that will lead you closer to your goals. Without any further ado, let's first discuss कि मेरे goals क्या है, and I'm really excited to take you guys along as मैं आपको बताऊंगी कि मेरा क्या थॉट प्रोसेस रहा है मेरे गोल्स सेट करने में, एंड आई हैव कैटेगराइज्ड इट इनटू अ फ्यू कैटेगरीज. The first category in my visions is the physical aspect. Physical aspect में दो सब categories है, the actual health and the appearance. For the actual health, I want to keep my gut clean. So I want to eat clean and I want to stay active so that my gut is happy. I have been on and off with my skincare because I have recently left my 9 to 5 corporate job. तो जब मेरा जॉब होता था तो मॉर्निंग में I used to get ready properly, skincare अपना properly कर लिया, I used to get ready and I had a routine. But then from the last month or month and a half, I have stayed at home only and I have kind of lost my sense of routine basically. There have been days when I haven't taken shower until 4 5. होता है ना, कहीं जाना नहीं होता तो we just feel lazy and don't take shower till late. और अभी like this is December, everyone is in like holiday mood, or my husband is also working from home, so we just keep watching something, or just the day has no structure basically. So I want to be very structured and disciplined throughout my day with everything, with my hair, with my skin, with my physical health, with my food intake, with my physical activity, everything. So that is the physical aspect of it. Second category is professional aspect. So as I mentioned to you, I have recently given up on my 9 to 5 corporate job, and that was like a steady source of income. It was like a security for me. But I think sometimes you need a push to really like rethink and pursue your dreams and really think about what you really want to do, and take that leap of faith. So I have decided to give my full time on YouTube, and I want to build a kind of community. My success is different for everyone, and for me my success is I want to build a community of people जिनको मैं अपने एक्सपीरियंस से और अपनी लाइफ से, अपनी हर एक की यूनिक लाइफ होती है, तो अपने लाइफ से मैं कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दे सकूँ या हेल्प कर सकूँ in any manner. The second aspect of professional goals is basically to monetize my this channel. Another aspect is financial independence. I want to create passive sources of income, or secondly I want to have the freedom to work from anywhere. Basically I am a travel freak. मुझे travel करना बहुत पसंद है, और जब मैं अपनी 9 to 5 जॉब कर रही थी ना, नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग, बट मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि मेरा नेक्स्ट वेकेशन कहाँ पे होगा, मैं नेक्स्ट घूमने कहाँ पे जाऊँगी. आई वॉन्ट टू क्रिएट अ लाइफ वेयर आई हैव फ्रीडम टू वर्क फ्रॉम एनी वेयर, एंड दैट फॉर मी इज़ अ पार्ट ऑफ फिनेंशियल इंडिपेंडेंस एस्पेक्ट. मटीरियलिस्टिक गोल्स है मेरे, जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो मटीरियलिस्टिक गोल्स में बेसिकली आई वॉन्ट अ प्लेस. If you know, like Singapore ना मुंबई टाइप का है. Singapore is densely populated city state country. It's a small island country and they have limited lands. It's very congested in terms of places, and if you want a good spacious place, it costs a bomb on you. So basically I want a good spacious house wherein I have my dedicated workspace, because now I am working from home. I do not have my office desk. I have to create one at my home. The next category is my travel goals, and I have a lot of goals in mind when it comes to traveling. So मुझे नहीं लगता ये 2025 में होना possible है, but maybe like down the line 2 years 5 years I would like to travel to these places, and first being the Australia. I want to go to Australia and see how is the lifestyle there and how is it as a country to live in.
Secondly, I want to travel to New Zealand. New Zealand has been on our list for a very, very long time. I am also looking at Vietnam. I want to go to Japan at some point, and I also want to go to Europe and experience the whole winter wonderland around Christmas and New Year's time. So the next step is I will get all the pictures printed. I have around 20 to 25 pictures, so I will need a big size board, and I will try to get the pictures printed in a medium size. So let's go see how that goes, and then we will get on to the actual process. Okay, so I've reached the place. Okay, so I've selected all these pictures, and I'm going to request them for printing all these pictures. These are all my loaded pictures here, and that's me. So this is the board I have found. I think this will do for now. काफ़ी बड़ा है साइज में, so I am hopeful that इस पे 20-25 pictures तक आ जाएंगे. So I have bought this basic pins which will stick onto this board, और इसमें 60 pins है, so this will stick like all my pictures. So we are stopping here. Let's go back and see if the photos are ready. Thank you. Okay, so that's total of 8 hours. Hi guys, I am back after a lunch break. बहुत भूख लग रही थी. It was quite late for my lunch, so मैंने फटाफट से लंच प्रिपेयर किया. अभी लंच खा लिया है. My tummy is full. अब मेरे पास सारे सप्लाईज है. ये बड़ा सा कार्डबोर्ड है, as you can see, और I have the prints, the pictures. ये सारे pictures है मेरे, around 25 pictures है. I have the pins that we are going to use to stick our pictures. I have the scissors. So we have all the supplies ready. So yeah, vision board का ना actually मेरा plan ये था कि मैं कोई cardboard box है जो electronic equipments के साथ आता है या कुछ, I will use that as a base for my vision board. But then I thought that maybe if I buy this kind of a board, this will be more permanent in nature. मतलब मैं किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ, या फिर मैं अपने नेक्स्ट ईयर के विजन बोर्ड के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ. But then looking at the quality of this one, I really do not feel like, you see, it's a very thin cardboard, so I don't think that we can use it for the next year. But anyway, अभी के लिए काम चल जाएगा. इसका साइज काफ़ी अच्छा है, and I am really happy about it क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पिक्चर्स थे. So anyway, let's get started. Okay, so these are the printouts. और कोई कोई फोटोज़ में ना मतलब ऐसे वर्टिकल जो पिक्चर्स थे वो स्क्वायर फ्रेम में आ नहीं रहे थे, तो दे हैड टू लाइक zoom it out to fit into the frame. So I will have to do a bit of cutting. So I have taken out all the pictures that needs trimming. Okay, so now I have shifted on the sofa. I have trimmed all the pictures, and let's go on to sticking it onto onto the vision board. First of all, सेंटर से स्टार्ट करते हैं, और सेंटर में मुझे रखना है this quotation that says good things are coming, and the second thing I am going to stick beside it is I am successful. Third one I am going to stick is this one, my YouTube silver play button, and I am going to stick it maybe here. My hobby, this is the picture of painting on a beach. मुझे outdoor painting try करना है instead of हर बार जो मैं घर पे ही करती हूँ, and Singapore has very nice clean beaches. So I will stick it somewhere here on the bottom corner. So this is the picture. It has all the greens, all the protein, and that's what I intend to eat more of in 2025. So there it goes here. And then let's move on to a cozy bedroom. Then this is my Europe travel dream. I have always wanted to watch Northern Lights with my partner, but
मुझे बाहर ठंड में जाके फ्रीज भी नहीं हो जाना, मतलब आई स्टिल वांट टू बी कंफर्टेबल व्हेन आई वॉच द नॉर्दर्न लाइट्स, हेंस द पिक्चर। ये एक कैबिन के अंदर है जिसमें ग्लास रूफ है, जो यूजुअली वहाँ पे टिपिकली होटल्स होते हैं, एंड आई वांट टू एक्सपीरियंस द नॉर्दर्न लाइट्स लाइक दैट, सो दैट्स दैट। इसमें मुझे दूसरा इमेज भी मिल रहा था जिसमें कि कपल बाहर खड़ा है स्नो में, एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स की यार बहुत फ्रीजिंग होता है एंड इट्स नॉट एज कंफर्टेबल, एंड बिकॉज वी बिलोंग टू लाइक हॉट ह्यूमिड places now, we are not used to this kind of cold. Another one is follow your plan, not your mood. I want to praise this because I want to go to many places and I couldn't possibly fit all the pictures in one vision board, so this is like taking a flight and going to everywhere in all the directions. You get my point. My 50k family in the corner, like this is how it looks so far. My affirmations that says I am extremely beautiful, I am worthy of love, and all these affirmations that I showed you earlier. So I am going to stick it in the first section here. Okay guys, so I am done assembling my vision board and it looks something like this. I'm really so excited to see the visuals of my dreams every single morning and to work on my dreams, and have faith in yourselves guys, and have faith in the universe, and have faith in the almighty, and we are going to do it. And you let me know, have you created any vision board yet, or did I inspire you today to create a vision board? Or if you have created one in the past, do let me know your experience. I would love to read through all your comments and all your experiences. Do let me know if you guys enjoyed watching this creative process, and thank you for joining me. And I just wanted to give you a reminder before I go that it is not only about your vision and your goals. The real deal is when you take action on your goals. So do remember to check in on your goals and take actions from time to time. Do not be lazy. Stay happy, stay healthy, and I will see you in my next one. Wish you all a very, very Merry Christmas and a very Happy New Year 2025. I'll see you in my next one. Bye bye.